Are we going live? Are we going live? Are we going live? Dude, my speed is terrible. I hope I am like properly visible. Okay, fine. Let's see. कैसा है? Am I laggy? I look very well laggy, भाई. Is there anyone looking at? Hi. 1 minute. 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 Hope this is, I'm doing good. Fine. Let's go. So first of all भाई हम लोग ये फ्रेमवर्क को ही रीडू कर रहे हैं, ठीक है. This is my very own framework that I made. Skip message. फिलहाल see this is something मैंने कंप्यूटर कुछ टाइम पहले ही लाइक बूट किया था, ठीक है. मतलब ये है कि मैंने हम लोगों ने इसमें से सारा कोड वोड सब हटा दिया था, सब कुछ हटा दिया था. एंड दिस इज इन अ कम्प्लीटली फॉर्मेटेड कंप्यूटर. सो आई डोंट आई एम वेरी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है. सो लेट्स जस्ट सी इफ देयर इज गिट इन दिस कंप्यूटर सेटअप. फाइन, that's great. Let's copy this and then just do a git clone. Okay, we already have this directory set up. कहाँ गया? I guess it's to do Rocket UI. Yeah. Let's open this in Cursor. I love Cursor more than VS Code. I don't know why. I love the extra benefit that come with Cursor. I don't use AI that much because my tier subscription is over. So I mean I'm pretty mad with it recently. I hope you are like able to hear my voice properly. Sheesh. Fine. I'll confirm if my voice is properly audible. I'll confirm if my voice is. I guess my voice is a little noisy at places. I'll solely avoid that, ठीक है. ठीक है. I guess that will be better for now. That would be better. My frames are dipping quite a lot.
My frames are dipping. My frames are dipping. Arey, I guess I haven't, turned on. Yeah, that's better. That's better, I guess. So I guess I can turn on my studio voice as well. That makes it even more better because I didn't knew actually what I was doing. High CPU or disable effect or close the air. But the fuck, how high is that? And makes it even more better because I didn't give a fuck. High CPU or disable effect or close the air. But the fuck, how high is that? And it's even more better because I didn't give a fuck. It just put a lot of load and it just sounds very fake. It sounds a little too deep for me and for my taste as well, so I won't be using that. um let's go. I'll just share this over to the internet if like people are going to join or not. I don't know what the fuck is going on. Oh, fine. I pick that up. Hope people join. So let's go. Yeah, I see my code here. Do a I'll do a get up pull. Get I'll do git pull here real quick. Yes, git pull origin main. No, it's not main. It's master. Okay, fine. Fatal detector ownership in repository. Rocket UI is owned by member device. Ah, fuck. That's bad. That's bad. Let's go. Let's just delete this. We don't want this. But I guess legacy. I guess we'll do a legacy to do Rocket UI. If there is something that I haven't committed before, I don't know, get clone. And there's something wrong going on with that. I don't know what is that about. Let's go. Let's clone this array to do. Okay. Um, See, when I was developing this, I had a lot of immature knowledge about how Rocket UI, how we should shape our projects. But now I'm mostly going to refactor it over the web or the internet because there's a lot of thinking that I do when I'm alone. I hope there's someone joining. Okay, okay, correct. Let's go. Fine. I was just checking up if I'm missing any comments. Let's see if everything works very well. I don't want to fuck it up. So PPNB. Yes. Do I have PPNB? If it seem it, I do have it. Okay, but PPNB install.
I've also switched my keyboard recently because my keyboard not working that good, and I don't like it either. I'm thinking about this doing regular streaming and stuff like that if it helps. Uh, fine, fine, fine. Just go a regular clear yes. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Python manage. Let's do this. Fine. Everything works. I mean, like, how long ago you have seen this app really works that well? But I have a lot of features that I'm missing. Probably. Let's go over to my GitHub repo. Yeah, I see this beta also. So in beta, I've made few changes that I shouldn't be making, but let's go with it. Rendering component and type object. Get full origin beta. Do a git branch beta and then git checkout beta. I'm mostly interested with the beta thing because beta is not that stable, and but beta is a shit cool thing that you find. Uh, let's do a git full origin beta. About please commit your changes and stash them. Okay, git. Let's do a git add. Okay, then do a git commit dash pre full. Okay, git full. Let's do a PNG shell. Let's do a like, Python. Because this was a shit pool here. Oh, fine. Let's see. We have a lot of heads as well. Let's go. Have the incoming change. A lot of status text as well. Like we always had it. But accept the incoming change. Accept the incoming change. Just save it all. I do not generally prefer to have auto save over my computer because it fucks up the experience. Okay, so I guess this works completely on my new rendering technology, which is frames. Uh let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. I have also forgotten because from a very long time I've been not coding on this framework because of obvious reasons. I've also looked at the window section. Yeah, my window section looks pretty okay to me. Rocket DB, we don't want that. That's some basic ass database system. I'm trying to change it with a more you know history like database
but I'll be doing it in near future. I don't plan to do it right now. Let's take a look. I guess in the SRC folder, you don't do anything here because this is your main folder, right? So you have all the resources here. You have all the glob here. Fine. How do I build Windows? So that I don't want to go into vendor because vendor is proprietary. Okay, fine. I've also committed this bottom navigation bar as well. Yeah. Now, how do I use that, and where haven't used it? Mm, the argument does it take? I've also made switches. Okay. Okay. Let's just initiate it. I bet it's create bottom nav. Okay. I don't know why, but it doesn't reference it. I've also put watchdog here as well. Like, I guess, yeah, take a look at this. So it does help you switch, but we have some bugs here. Like, I just create a new form here and just pulls out something completely random. Okay, it does re-render it again, and we don't want it that it should re-render things again. So I'm gonna pull this out here because it should not belong here. It should be under your main app here. Okay. Okay. Oh, fine. I've made it. I made it. I render this uh, video from app dot no from I guess src dot navbar create, yeah, fine. It just reads my mind here. It just reads my mind here. It's crazy. It works. So at this point, we cannot, just inject it anywhere. So this is supposed to be how it is. Fine, that's good. Now let's make some goals here. Like what we do have to figure out. First of all, I do have to make a refactoring. I do have to make documentations of this project. I do have to do a lot of shit. First of all, let's check if there are any comments. I mean, in seeing it. Stuff, Ahmed. Hello, bhai. Hello. Hey. I better go. Just do a text here. Fuck! Don't tell me my screen was black. Don't tell me my screen was black. Why is it black? Okay. Why is it black? Shouldn't be black. I actually am planning to have a display here because I don't have a DP cable at this point. So yeah, I'll be buying the DP cable here because like my monitor is quite far away from my graphic card ports. So that's some bad news. I did had a bottom nav bar here. I don't know why, but it doesn't reference anything, and that's super annoying. Super annoying. Bottom nav bar. It comes from Rocket vendor, from vendor Rocket components. Component utility. Okay, it does behave that way. Where do I initiate it? Like, I do have a create bottom nav bar, but I never create it. Or I guess I just do a. Wait a minute. I have. I'll take a little bit of time here. It does work the same. It does work the same.
And dark mode is somehow not applied here. I guess that this is because it's a complete frame. So yeah, we have to do that as well. Okay, fine. देखो यार जिंदा है, मैं भी स्ट्रीम करने जा रहा हूँ कि यार कर लो। या भाई, I'll be love to collaborate with you पृथ्वी भाई। तो I guess if you are replying, full motivation दे दिया, अरे भाई we are back to our old days now, like how we used to do it. By we have built a complete native framework that builds Windows apps. So work that well. Guess that's C or dash R if you make changes to code. It does hot reload it. Does it hot reload it? I guess we have to take a look at how this is. By the way, this is super cool. I hate this. I know. I guess Watch Dogs चालू है. ppnb shell python python manage dot I guess manage dot py dash dash help. Yeah. ओके फाइन, मेरे को देखने दो कमांड्स क्या क्या है। रन मैंने बनाया था। मैंने हाँ मैंने रन के साथ कुछ बनाया भी था शायद। हाँ, डैश आर फॉर हॉट रीलोड, डैश सी फॉर क्लीन। ठीक है, तो I want to do a dash R because I want to hot reload my application every time because yeah, it's cool. Hot reloading does help with cutting development time. तो मेरा full with me कौन सा वाले चैनल पे, I mean just we can code better with each other. So कोडिंग चैनल पे अभी फिलहाल तो मैं गेम्स नहीं खेल रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर तो वैलोरेंट नहीं चलेगा भाई। ऑफलाइन गेम्स ही खेलता हूँ अभी तो, वो भी बहुत मुश्किल से खेलता हूँ। सब देखो, मैं कंट्रोल की दबाता हूँ तो ये फिर से एप्लीकेशन रिलोड हो जाती है। तो तुम्हें अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसमें हुक्स भी डालने वाला हूँ। मैं इसमें इवेंट डिस्पैचेस भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ बिकॉज आई हैव लर्नड इट एंड आई गेस दिस वुड बी अ वेरी गुड यूज केस फॉर मी। Fine, let's just find some issues to fix. If I do comment a lot, it's more like documentation, create new component. और ये रेफरेंस नहीं कर रहा है, दैट इज अ वेरी इरिटेटिंग पार्ट ऑफ इट। मुझे लगता है मुझे VS कोड पे ही करना पड़ेगा, VS कोड मेरे लिए बेस्ट है। 20 दिन रुको, सीखने दो यार। मी वॉच डॉग्स खेल रहा था बट आज वो वैलो की स्ट्रीम हो गई। तू स्ट्रीम कर रहा है आजकल? तू स्ट्रीम कर रहा है आजकल? आई डिडंट न्यू। विलन पे ना? मैं VS कोड पे वैसे कोड करने वाला हूँ फिलहाल बिकॉज आई लव इट। प्रोजेक्ट गुड रॉकेट यूआई सिलेक्ट प्रोजेक्ट्स। ना 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 ना, मैं तुम्हें फॉलो करता था शायद, ये चैनल पे करता हूँ या नहीं कर, हाँ ये करता हूँ भाई। अच्छा, ये तो भाई 1 साल पुरानी स्ट्रीम है। ये सब 1 साल पुराना है। तो ये 1 साल पुराना है। अच्छा भाई, ये गुड थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरी देखने के हिसाब आज तो मुझे लगता है भाई अच्छी थंबनेल इंपॉर्टेंट है भाई। मेरा जो डाउनफॉल चल रहा है ना अभी, इतने टाइम बाद लौट रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कुछ कुछ चीज़ों को। आई गेस अभी हाँ ये रेफरेंस कर पा रहा है, दिस दिस इज गुड।
दिस इज गुड। आई शुड नॉट गेट दिस ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बीव तभी करेंगी जब, आई गेस मुझे पर ये भी बताना पड़ेगा ना कौन सी विंडो में करना है। मुझे मुझे विंडो एक रेफरेंस भी देना चाहिए, विच इज बाय डिफॉल्ट मेन विंडो। ठीक है, तो ये जाएगा ये विंडो में। ठीक है, विंडो रेफरेंस लेगा और मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये परफेक्ट एप्लीकेशन है भाई। टिप पीएनबी शेल वाइट है। ये नीचे चला जाता है। वॉच डॉग्स लाइफ पे जाओ, 1 साल पुराना है। माइल्स मोरालिस खेल रहे थे। अरे मुझे माइल्स मोरालिस चाहिए। व्हाट द फक भाई, गेम बहुत क्रेजी है। ये मुझे एक मिनट देखना। डज दिस गो 1080p? 1080p इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, और क्लैरिटी भी अच्छा है भाई। इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट। इम्प्रूवमेंट तो है स्ट्रीमिंग में। रिलीज, ठीक है। मुझे हाँ, ये चाहिए मुझे भाई, ये इंटीग्रेट अच्छे से होना चाहिए। टू डू लिस्ट आ कहाँ से रही है? या मेन विंडो कॉन्फ़िगरेशन, आई गेस ये आर विंडोज के अंदर रहेगा। हाँ, फिर ये मेन विंडो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से पास हो रही है। हाँ यार, फाइन, देख, ये एक साथ दो दो विंडोज नहीं संभाल सकता, मुझे भी ऐसा लगता है। तो फाइन, ये होम स्क्रीन हो गई। ये होम स्क्रीन रन होती है। फिर ये मेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन के अंदर मेन स्क्रीन रन हो रही है। और फिर क्रिएट विंडोज ना, मुझे मैं इससे अच्छा तो, अच्छा मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशनली कैसे मैं विंडोज को लोड करना चाहता हूँ, ये लाइक इफ 1 = 1 या 1 = 2, तो तुम ये रन कर सकते हो, वरना एल्स प्रिंट यू आर लॉक फ्रॉम दी ऐप। ऐसा करोगे तो भाई ये विंडो पूरी ब्लैंक हो जाती है। क्रेजी भाई, ये इतनी पॉसिबिलिटीज है ना इसमें। लाइक मैं मेन स्क्रीन लोड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यू यू कैन राइट योर स्क्रीन कोड लॉजिक हियर। दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी। आरडीआर की एक स्ट्रीम की थी लास्ट टाइम भाई, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई करो, लेकिन कंटिन्यू स्ट्रीम करो। मतलब ये है कि ना पार्ट्स बनने चाहिए उसके। और मैं तुम्हें एक बात, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हियर, बट स्पीक अ लॉट, स्पीक अ लॉट। वो बीच बॉय जैसा करता है ना, वैसा करो भाई। बहुत बहुत बकबक करो, नहीं वो ऐसे लाइव में बकबक नहीं करते, तुम लाइव करते हो ना। तुम रिकॉर्ड करके डालो भाई, रिकॉर्ड करके डालोगे तो अच्छा फॉर्म ये होगा। आरडीआर कौन सी है ये, डिसऑनर?
ये तो भाई साहब व्हाट द फक इज रॉन्ग भाई, कितनी लाइव है भाई। आरडीआर की थी 2 महीने पहले। क्रेजी। भाई तो मेरा इसमें प्लान है आइकन लाने का, ठीक है। तो भाई मैं मटेरियल आइकन इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसमें, फक इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है कि मुझे सारे एक साथ चाहिए डाउनलोड करके। चलो चलते हैं स्ट्रीम करने, ठीक है भाई। गुड लक विद योर स्ट्रीम। आई बी डूइंग दिस स्टफ अभी थोड़ी देर के लिए। नहीं मुझे सब एक साथ डाउनलोड करके चाहिए। बीस आइकन नीचे, 20 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, बाय 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 बाय। एक काम करते हैं, गूगल का आइकन पहले डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं कि अगर कैसे कैसे करना है। प्लानिंग ऑन डूइंग लाइक दैट, ठीक है। पहले तो आई गेस। इसको करते हैं। ये सारे पीएनजी आइकन पैक से चाहिए, बाय द वे। ठीक है। इसको उठाते हैं हम, और इसको हम अपने मेन ऐप के रिसोर्सेस में डालते हैं। आइकन पे जाएगी आइकन, ये मूव करते हैं, ठीक है। आई मीन आई एम प्लानिंग ऑन ठीक है। Now let's think of how how can we just just render that icon, right? So I guess let's go into vendor here. Got a file called icons. Okay. Let's do a
लेट्स डू डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई, बिकॉज मुझे सारी चीज़ें आउटसोर्स नहीं करनी है, सारे फंक्शन बाहर नहीं जाने चाहिए। बिकॉज कुछ कुछ फंक्शन भी है जो मुझे चाहिए कि इस फाइल के बाहर एक्सेसिबल हो। सो लेट्स मेक अ लॉजिक। हाँ, कांट मेक अ मेन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स गेट एन array here, ठीक है। array that just gives me, let's get all the files from icons directory. Let's make gpd write it। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले तो हम लोड करेंगे सारे फाइल्स को। पाथ के नाम पे आई गेस मैं हैव, let's take a relative path। ठीक है, let's just go ahead and put it here। we know कैसे होता है ये। ठीक है, क्लास icons। ठीक है, let's do a def underscore underscore init। ठीक है, let's just put all this code here। ठीक है, let's do a self dot files, self dot files, tuple here, file here। I guess this is how it works, like from typing port literals। ठीक है, and let's do a def uh, load icon। ठीक है, self icon underscore name, let's do a string icon। ठीक है, now let's just put, no, I guess let's do a literal here, let's self now, it won't be how it would be happening is पहली बात इसको बाहर रखते हैं। ठीक है,
Yeah. I can underscore name let literal. Okay. Files. Okay. And we can just go with that. How long it's been? How long it's been? Okay, Pyrite. It's a icon based on files actually, but your folder, but manually hard coding them, like generating literals and declaring once and pay. Okay, fine. Then you can copy that line and paste it in your code. Okay. Okay. And do it like this, like this. Acha, it is telling me to do it like this. Like generate literal here, but I guess this would work as well. Okay. Let's make icons. Okay. Dot and
Anything that changes into tuple is immediately accessible. Yeah. From vendor dot icons dot left side icons. ठीक है. Icons dot. It doesn't really work. Hmm. ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो इस आइकन्स के अंदर है और उनको वॉच करता रहे. जैसे ही वॉच होगा वैसे ही इट गिव मी ऑल दी डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी आइकन्स देयर आर एंड देन पहली बात तो एक फाइल रीड राइट होगी एंड देन फिर ऐसा कुछ होगा. ऐसा मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए. दैट वुड बी अ वे बेटर आइडिया देन एनी ऑफ दिस, बट ठीक है. लेट्स जस्ट लेफ्ट एट विथ. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आइकन्स में जाते हैं, आइकन्स आइकन्स, ठीक है. Point of literals is like, yeah, I understand how they're going to do it. Let's just, let's just go with it. Cache to prevent garbage collection. सेल्फ कैश करता है, मतलब मुझे एक ही आइकन का इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा मेरे पूरे कोड में. इज क्रेजी. तो मुझे और एक आइकन इनिशिएटर बनाना पड़ेगा. ऐप डॉट ना. मुझे एक लगता है वो ऑटोमेशन टूल वाज वेरी गुड, लाइक इट जस्ट जनरेट्स ऑल द.
देन इट गिव्स यू एक्सेस। तो जैसे मैं डंप करूंगा वैसे ही वो पूरा डॉट पाई फाइल में सब लोड कर देगा। वो अच्छा था एक पार्ट। कोई नहीं, आइकन्स ठीक है। ठीक है, हाँ, अब ये हटा सकते हैं। एंड देन वी कैन गो फॉर सीधा मेन स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन जा सकता है, या फिर नहीं, एक काम करते हैं, बॉटम नैप पर जाते हैं। कूल 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 कूल। भाई ये पूरा ना मुझे ऐसा लगता है फ्लटर शिट है भाई, फुल फ्लटर शिट है। ठीक है, मुझे एक्चुअली ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ। फ्रॉम फ्रॉम ऐप नहीं, फ्रॉम src डॉट, नहीं 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 नहीं, कंट्रोलर का है, फ्रॉम ऐप डॉट कंट्रोलर मैनेजर इंपोर्ट आइकन। ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज लाइक ये सब पार्ट ही निकल जाता है, विच इज व्हाट वी कैन डू इज आइकन आइकन। Now let's see. Let's go add.png. Let's go add.png here. हाँ, add button got an unexpected. मुझे देखना है क्या करता है। तो मुझे दिया क्या है, मुझे वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। एक्सेस आइकन्स में मुझे इसने प्रिवेंट गार्बेज कलेक्शन, इट्स अ गुड थिंग भाई, गार्बेज कलेक्शन इज ऑलवेज अ गुड थिंग। मुझे ये देखना है कि किया क्या है। फोटो इमेज में डाला, इमेज लोड की, इसने मुझे फोटो इमेज दिया है। इन शॉर्ट मुझे फोटो इमेज को बस डालनी है, आई गेस उसको करता है कुछ लेबल, लेबल डाल के कुछ करता है ना। Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. If this works, it would be too fucking great. Holy shit, holy moly! तो क्या किया पता है उसने? अब जैसे मैंने यहाँ से आइकन्स पास किए, ठीक है, ये आइकन्स यहाँ से आए, ठीक है, मेरे सेल्फ में चले गए। अब ये मेन दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ पे ये सेल्फ डॉट सेल्फ ऑप्शंस यूज होते हैं, विच इज सेल्फ डॉट ऑप। तो इसमें इसने आइकन्स का भी सपोर्ट ऐड कर दिया है, विच इज सीटी के बटन के अंदर। ओके फाइन, that's great, that's cool, that's cool, that's cool, that's cool. Now let's add more icons to this shit. Add more icons to this shit. Or I guess we can make a code generator that does it pretty well. Like icons dot, I can do like we can do a icons dot add, or I guess icons dot home, और उसके अंदर बस उसका फाइल पाथ रहेगा। I guess that would be a better approach. Makes everything more easier. ठीक है भाई, कोई नहीं, पहले तो होम का ऑप्शन डालते हैं, होम। ठीक है,
home.png। और अभी हम वो जाते हैं इधर रिसोर्स के अंदर आइकन्स पे ड्रॉप कर देते हैं एंड लेट्स राइट हियर होम। Can do the same with profile like this. Let's do a profile.png, put it here, right? Like, how cool is this? How cool is this? Selected page पे भी है guess वो ये होना चाहिए कि this page is selected, something like that. When this worked good, I'm very happy with it as well. But yeah, ईडी के ईडी के फ्रेम का रेफरेंस क्यों नहीं है भाई? ठीक है, साइन वैल्यू, अरे ये तो मेरा वो है ग्लोबल ग्लोबल चेकर है। मैंने कब बनाया था भाई ये? मैं आधे से ज्यादा टाइम तक वो की वेयर एम आई? So by the way, this is something, this is a global, जैसे use state होता है ना वैसे ही ये होता है, but ये use state से better है because I mean it's not better than use state in some context, but it's more about पूरे application का storage इसमें ही होता है and it that directly goes into memory, so it's very fast. Okay, मुझे इसमें ना और वो भी डालना है, क्या बोलूं? ये पेज मैं लोड कर रहा हूँ बस, ठीक है, बट मैं ये कैसे पता लगाऊं कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो it should get selected? ये स्विचर इसमें जाता है, ठीक है। कंपोनेंट नेम now, which is key name, which is component name। ये पेज का नाम है, ये कंपोनेंट का नाम। ये और एक चीज जाननी पड़ेगी कि अरे लेकिन ये कमा बटन के अंदर से जा रहा है ना, बटन के बाहर से भेजना है तो पावर इज प्रीटी नॉट एविडेंट भाई। इट्स मोर लाइक मैं बहुत टाइम के बाद से आ रहा हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग इज गोइंग अबव माय हेड। आई हैव टू यूज Pydantic इसके लिए। Schemas are very important to me at this point because everything is going very static,
in nature, which I don't like, obviously. Yeah, people are there on the street. Okay, and we got one concurrent viewer few minutes ago. Let's go. Image reference अपन icon ठीक है. Can be like can be add options, add icons like this, like casually add icons. If that is the case, I'm sold. I am sold. Like मैं header row में जाऊँ, ठीक है. यहाँ मैं बोलूँ icon icon ठीक है. Icon dot r label form dot r label frame. हेडर पे मेरे नीचे है. नहीं ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. Take on text यही लेता है भाई. It doesn't take a lot of image, नहीं लेता है, नहीं लेता. Okay भाई, this leak, this leak. If you can see this, by this is a big achievement to me, as to me at least. अगर मैं एक अच्छा आइकन पैक इंटीग्रेट करवा पाऊंगा ना, मतलब मैं बिना देखे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे इसमें इतना आइकन है, तो भाई इट वुड बी ए बिग अचीवमेंट फॉर मी. इनके नाम सही चाहिए बस. और जब बंद हो गया क्या? नहीं, ठीक है. Guys, that's it for all. Bye. This was after a very long time. I guess love the video. I'll be signing off for now. I hope